ओके, सो गुड नून ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज के सेशन में विल गोइंग टू डिस्कस सक्सेस स्टोरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मुबीना, कॉन्ग्रेचुलेशन आकांक्षा, कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे पृष्टि कि आप सभी ने यहाँ पे जेआरएफ को स्कोर किया है. और जी आज हम यहाँ पर इनके सक्सेस स्टोरी के बारे में समझेंगे कि कैसे उनकी जर्नी रही है प्रिपरेशन के दौरान. सो वन बाय वन करके दे विल गिव यू द इंट्रोडक्शन कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कैसे उनका प्रिपरेशन हुआ है. तो फिर धीरे धीरे करके हम कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. सो कौन यहाँ पे स्टार्ट करना चाहेगा सबसे पहले? आकाशा, वुड यू लाइक टू गो फर्स्ट? Yes, यस ma'am, I will. ओके ओके ग्रेट. तो स्टार्ट करो. First of all, yes, ma'am. First of all, thank you so much, ma'am. एंड मेरा नाम आकांक्षा दिनकर है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैंने जी. अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स एजुकेशन है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी लास्ट ईयर. ओके. सो मैम मेरी एमएड के बाद में हम्म. एक्चुअली बहुत कंफ्यूज थी मैं कि कैसे नेट के लिए प्रिपेयर करूं क्योंकि मेरी एमएड का जो फर्स्ट ईयर था वो हम्म. कोरोना के टाइम पे हुआ था तो हम लोग की पढ़ाई थोड़ी अफेक्ट हुई थी. जी. तो इस वजह से मतलब सही मोटिवेशन या सही गाइडेंस मिल नहीं रहा था और मैंने मतलब मेरा लक था कि मैंने लास्ट मोमेंट पे आपको मतलब देखा आपका चैनल. तो आप जी. उस टाइम पे क्रैश कोर्स स्टार्ट करा था आपने. जी. तो जी. मुझे लगता है कि क्रैश कोर्स सबसे इफेक्टिव तरीका है अगर आप मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट करना चाहते हैं और प्रिसाइज और कंसाइज जिसे हम बोलते हैं स्टडी को वो जी. कंप्लीट करना चाहते हैं. तो मैं अपने मतलब सारे फ्रेंड्स से और एस्पायरेंट्स से ये बोलना चाहूंगी कि इवन अगर आपके पास कम टाइम भी है इवन अगर आपके पास 3 मंथ्स में तो भी आप होपलेस मत होइए. आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने मतलब बेसिकली सिर्फ 2 महीने लास्ट के प्रिपेयर करा और हम्म. जैसा मैम ने बताया था कि नोट्स बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम बुलेट नोट्स कहते हैं कि आप पॉइंटर्स नोट्स बनाइए शॉर्ट में ताकि आप लास्ट टाइम पे उसे पढ़ पाए. ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज्यादा डिटेल में लिख लिया और फिर लास्ट में आपको ये लग रहा है कि अरे मैं इतना सारा कैसे कवर करूंगा. जी. तो सबसे इफेक्टिव मेथड है जैसे मैम बताती है पॉइंटर नोट्स लिखना. उसके अलावा जैसे कि मैम आप टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे अलग अलग डिटेल्स भी बता दी थी जैसे अगर आपको जी. टॉपिक पढ़ानी है तो आपने उससे रिलेटेड दूसरी चीजें भी बता. तो मुझे लगता है कि हमें ऊपर कहीं पे मार्कर से वो हम्म. चीजें भी नोट करना पड़ता है जैसे कभी आपने किसी राइटर या ऑथर का नाम बताया जी. और सारे इंस्टीट्यूशंस के स्टैब्लिशमेंट ईयर. तो इन सारी चीजों को मैंने एक मतलब अलग सेक्शन में लिख रखा था कि जैसे स्टैब्लिशमेंट ईयर हम्म. क्या थे, हम्म. ऑथर कौन कौन से थे. तो मतलब नोट्स के अलावा भी इन्हें अलग से लिखना थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है ताकि हम लास्ट मोमेंट पे एक बार बस गो थ्रू कर ले कि जी. ये जी. पॉइंट्स भी हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक मतलब इफेक्टिव मेथड या टेक्निक हो सकती है लास्ट में रिवाइज करने के लिए. ओके आकांक्षा. उसके ओके यस मैम. ओके ग्रेट आकांक्षा. व्हाट अबाउट मुमीना, आप यहाँ पे क्या शेयर कर सकते हो? क्योंकि एक आकांक्षा ने मेजर पॉइंट यहाँ पे बताया कि जो नोट्स मेकिंग जो है कि कैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुलेट्स पॉइंट आप मेंटेन कर सकते हो. तो आपका क्या कैसा रहा प्रिपरेशन और कैसे आपने इतने अच्छे स्कोर गेन करा? तो आप वो शेयर कर सकते हो सबके साथ. जी. Good afternoon, ma'am. गुड Thank you आफ्टरनून. so श्योर. much for inviting me on this very platform. I am so happy to know you and to hear you once again after my classes. Ma'am, actually, my journey towards this JRF was somehow it was in a consistent way. ओके. Like in 2019, I have cracked my this NTA-NET. हम्म. Then I qualified 7 times net. Only ओके. one point, one question was missing in my GRF. ओके. Ma'am, that way it was somehow matlab sweat matlab it was blood and sweat from me. Only one point missing in the JRF. हम्म. But ma'am, it clearly helped me. Matlab, the consistency in my this very exam जी. totally helped me. Like I cracked, I was among the toppers in the JK set recently. यस. I was among the like in the merit list in the JKPSC. हम्म. But the consistency in my exam that यस. totally helped me to gain up the total content matter of my subject. यस. तो मैम इसको मैं ऐसे रिलेट करूंगी बिकॉज आई एम परसिविंग सेटल माई PhD हम्म. at one of the state university of my this J&K state. ओके. तो मैम इसको साथ साथ रखना और इस गोल को साथ रखना PhD के साथ साथ मैम इट वाज somehow tough. लेकिन आई cherish this very goal really by making this by making the short notice like Akansha has rightly said कि हम्म. short notice bullet notice like हम्म. the relevancy of the topic towards the other concepts as well. यस. तो मैम मैं यहाँ पे अपने एस्पेरेंट्स को बस इतना बताऊंगी क्योंकि हम्म. मेरे इस जर्नी में हम्म. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का हाथ है लाइक हम्म. फर्स्टली व्हेन हम्म. syllabus was changed in 2019 हम्म. and I was like in a mess
कि how Hmm. can I do it, how can I clear it. Hmm. So ma'am, that way on academy has helped me a lot Hmm. that time. Hmm. But I was in the self study mode as well. Okay. So that time I made short notes, like the first syllabus was changed in a Hmm. proper way, मतलब ना, like fully changed syllabus. Okay. तो मैं उन concepts को एक साथ करना, that was somehow a मतलब hard job for me, Hmm. but I made that Okay. both paper 1 and paper 2. मैं Okay. that way finally with time I finished up these very concepts. Okay. तो उस चीज को उस मतलब जो वो कंसिस्टेंट मैंने पहले ही बोला, Hmm. इट वाज टू मच हार्ड फॉर मी टू गो Hmm. थ्रू दिस, लेकिन मैम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव्ड माय गोल. Okay. बट द फाइनल टच, मैं यहाँ पे बोलूंगी, द फाइनल टच ऑफ माय प्रिपरेशन that had made a very much difference in my preparation, Hmm. that was your platform, and I thank you once again, ma'am. Thank And you that so much, was Mumira. Thank you so much. that was, that was really a crisp मतलब crisp sharpness for my preparation Hmm. that helped me a lot in achieving my goal. Thank you so much ma'am once again. And ma'am मैं यहाँ पे बोलूँगी, never give up, Hmm. never give up. Hmm. Give up तो नहीं करना है, because Hmm. whenever we have something in our mind, we have to crack it by Hmm. one way or the other way. Hmm. And aspirants को ये भी रहना है कि you Hmm. should be, and we all should be sincere and Hmm. religious in our preparation. Hmm. Sincerity and religiousness should be in our preparation, Yes. and somehow we should be in enough smart, Hmm. rather strategic in our preparation as well. Hmm. So जी मैम. congratulations again, Mumira. What about थैंक others? यू. What about Prusti? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कैसे प्रिपरेशन करा? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एज आपको भी कि आपने बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर किया है एग्जाम में. तो कैसा रहा आपका जर्नी? तो आप शेयर कर सकते First हैं. of all, thank you so much, ma'am. Because as you know, I have prepared completely from YouTube. I've Hmm. just recently joined your class for OPSC Yes. PGT. Yes. So, ma'am, Hmm. I have completed my graduation with geology honors. So, Okay. at first, Hmm. when I enrolled in B.Ed and then M.Ed, it was hard for me. Hmm. When education was going over my head, and everyone was talking about net JRF, those were like, what is this for me? And education, the term itself was tough for me. Hmm. So I asked one of my friend, what should I do, where should I start? Hmm. During med, and the first year was COVID, it Hmm. was online classes, Hmm. so that made med even more tough. So Okay. she suggested me few channels on YouTube. One was yours. Hmm. I've gone through all those channels. At Hmm. that time, I was searching for something like, one thing I can say, ma'am. Hmm. I got attracted by your voice. As Okay. education is boring for me too. Okay. Being a zoology student, science student, it was hard for me. Hmm. So I started preparation. I am at that time. It was 2022 August, I guess. My med was going to end. ठीक है. So first time I joined your class, not joined actually, Hmm. YouTube. That 43 videos of your playlist, Hmm. that I started that and made my notes. I had little confidence back then. First time I attended net at 2022 December. I Okay. cracked net in my Okay. first attempt. Hmm. That was percentile, so I had no idea how much scores I was racking from JRF. Hmm. Then I targeted JRF in June 2023. I had 188. I lagged it with Okay. 2 marks only. Then I started analyzing what is exactly happening. I got Hmm. to know I am not preparing PYQs, which is Okay. important. Hmm. PYQs and paper 1. At that time, I had less marks in paper 1. Hmm. So during June and December, I focused mostly on paper 1 and PYQs. So Hmm. I will tell everyone, don't neglect paper 1 if you want JRF. Hmm. You can get net by paper 2, but paper 1 is equally important. And this Hmm. time I secured 222 from 180 to 222. This is, and Congratulations. I'm really so happy. Thank you so much, ma'am, because I have still those notes Hmm. that I prefer practicing till now, because education is something you cannot just
do it anytime. You have to practice it. practice it. Yes, practice and You can have consistency. conceptual Yes. understanding, but those factual data you have to practice it in a regular basis. So I am now willing to get enrolled in PhD courses, and Okay. luckily there is Revensa and another university of Odisha. Currently, their form fill up is going on. Okay. I'll try it for Revensa. All the very best, all the very best for this Thank you, ma'am. opportunities. एंड Thank ऑल्सो you, वन ma'am. मोर थिंग, क्योंकि आप सबने एक मेजर एक पॉइंट यहाँ पे, आप सब में से जो जो पॉइंटर्स यहाँ पे निकले तो मैंने वो नोट करे. फर्स्ट ऑफ ऑल दी कंसिस्टेंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंटली तरीके से अपने गोल को आगे लेके चले. ऑन दी अदर साइड देर इज़ अ पेपर वन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पेपर वन को डिनाई नहीं कर सकते. यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टू ऑफ दिस. एंड ऑल्सो द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक होता है कि आपने ऊपर से सरफेस लेवल पे पढ़ लिया, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाई, जब अप्लाई करना होता है उस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, सो दैट क्रिएट्स अ वेरी चेंज, मतलब एक तरीके से ड्रास्टिक चेंज आपके प्रिपरेशन में वो लेके आता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो यहाँ पर एक वन पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि नोट्स मेकिंग. काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि एक होता है कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, उसमें जो भी आपको पीडीएफ्स मिल रहे हैं तो आपने उसको गो थ्रू करना स्टार्ट कर दिया, बट व्हाट अबाउट योर नोट्स, जो आप सेल्फ स्टडी के नोट्स बनाते हो, क्या वो कुछ इम्पैक्ट लेकर आते हैं, क्या वो चेंज लेकर आते हैं? तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? एंड ऑल्सो नोट्स मेकिंग करनी कैसे है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सब कुछ पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स लिखना है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ पॉइंटर्स आपको लिखने हैं, तो वो पॉइंटर्स होने क्या चाहिए जो आपके स्टडीज़ में, आपके प्रिपरेशन में एक मेजर चेंज लेकर आए. तो वो पॉइंट आप यहाँ पे सब एक बार बताओ कि कैसे कैसे नोट्स मेकिंग आपने करी. फर्स्ट आकांक्षा, आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं. यस मैम, जी. लाइक आई सेड बिफोर कि नोट्स हमेशा शॉर्ट और कंसाइज होने चाहिए. हमें ओके. पूरा मतलब पैरा नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग थ्योरी राइटिंग नहीं कर रहे. तो नोट्स जितने शॉर्ट होंगे, जितने इफेक्टिव होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जैसा आप हमेशा बोलते आए हैं हम लोगों से कि कीवर्ड्स इंक्लूड करना, कि हर ओके. टॉपिक के, हर फिलोसफर के, हर एजुकेशनिस्ट के कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं. हमने जितनी भी फिलोसफीज देखी, जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी साइकिल्स हैं, जी. सबके कुछ ना कुछ कीवर्ड्स हैं. तो उन्हें इंक्लूड करना अपने नोट्स में. और मैम उससे ये फायदा भी रहता है कि जब हम उनको रिवाइज कर रहे होते हैं तो वो कीवर्ड्स हमारे माइंड में स्टे करते हैं लास्ट टाइम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. तो यस. सबसे इफेक्टिव है कि नोट्स जितने शॉर्ट होंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है. वेरी और गुड. क्योंकि नोट्स बनाना एक मतलब मे बी कुछ लोगों के लिए टायरिंग प्रोसेस हो जाता है, बट मुझे लगता है कि आप सिर्फ पीडीएफ पे या वर्चुअल उस पे ना डिपेंड करके अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है. और हमारे एजुकेशन में वैसे भी कहा जाता है कि रोट लर्निंग मतलब नहीं करने के, यस. आपने बस एक बार पूरा पढ़ लिया और फिर बाद में आप भूल गए. तो बेटर है कि आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा. और अंडरस्टैंडिंग में मतलब सेल्फ नोट सबसे ज्यादा आप खुद समझ सकते हैं. हर किसी का एक अपना कंसेप्ट ऑफ माइंड होता है, तो उसमें आप मतलब अपनी अपनी भाषा में, अपने में कैसे आप समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए नोट्स बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है. और फिर आगे जाके भी ये काम आएंगे जब यस. हम लोग पीएचडी या जैसे भी मतलब आगे प्रिपेयर करेंगे. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉस है. आप अपना थोड़ा टाइम दे के इफेक्टिवली अपने नोट्स हर सेशन के बाद बनाएं तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि चीजें फ्रेश रहती है माइंड में, जी. तो आपको याद रखने में, समझने में इजी होता है. यस, वेरी गुड आकांक्षा. मुमीना, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग नोट्स? Ma'am, I believe that any net aspirant, whosoever, ma'am, should believe in four things. Should be, ओके. matlab, should follow four important things. ओके. Yeah, implemented wholly, matlab, sincerely, I mean to say, consistently. First one, first point is syllabus completion. वेरी गुड. Syllabus सिलेबस completion कंप्लीशन. with concept, matlab, syllabus completion, but with concept clarification. You have to clarify each and every concept whatsoever, may it be any among the 10 or 20, I mean to first and second both, first as well as second paper. ओके. Ma'am, second thing is PYQs. You cannot ignore them, you cannot deny them. PYQs important, second option from my side. Third is mock test. Ma'am, almost I have given 300 plus mocks on NTA Abhyas app. ओके. But that really changed my whole journey. Matlab, that totally helped me to get the exam exposure. I request my aspirants that everyone should go through that very platform to go through these very mocks. Fourth one is ma'am revision. Without revision, everything is impossible. Because once we read each and everything, we can't revise that. That is totally in vain. Ma'am, we should revise the things whatsoever may be the concept.
we should revise the things wholly by going through the key pointers. As Akansha has rightly said, we have to write down these very key pointers and the relevancy of the topic with the other things as well. That way, the note should be made. Like any topic, having the key point, having this very keyword, but the relevancy of the topic with the other things should be also done, ma'am. From my side to my aspirants, these four things should be taken into consideration in order to clarify not only net जी but GR. ओके मुमीना वेरी गुड व्हाट Thank अबाउट you. पृष्टि आप यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहेंगे अबाउट नोट्स मेकिंग Yes, ma'am. Note is definitely important. हम्म No matter how much PDFs you are going through or YouTube videos, हम्म go through the videos. Concept clear होना चाहिए. बस उसके बाद आपको notes बनाना चाहिए अपना. यस So you have to make your own notes. That is what helps during when NET exam is like 15 days or 30 days. Because you cannot go through the entire paragraph at that time. यस Make a precise note of everything like you are doing in those 43 videos because I have followed them a lot. Yes. Like if Sankhya philosophy, make points of what is important points of Sankhya philosophy. You cannot go through the whole thing at last time. And revise is something you need to do on a regular basis also. What you have studied in the morning, you need to revise that thing in the night because that is the thing. I think that was my fault when in my first net attempt. And another thing is complete entire syllabus. Don't miss anything. यस In my first attempt, Krishnamurti, like those जो छोटे छोटे होते हैं ना लास्ट में, मैंने उसको छोड़ के चला गया था कि मुझे ओके लगा कि गांधी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, पर क्वेश्चन उसमें से बहुत ज्यादा आया था. जी तो कृष्ण मूर्ति पे बहुत सारे क्वेश्चन आते बहुत हैं बहुत होते थे. अब हाँ क्या है ना, मैं उस वक्त बुक भी देख रही थी वो आर्यंत वाला, उसमें छोटे छोटे हैं, मुझे लगा कि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा, तो मैं छोड़ के चली गई. तो इसीलिए अब जून वाले में तो 2 मार्क्स से रह गया था. तो ओके हर चीज को पढ़ना चाहिए आपको. फर्स्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कीजिए, उसके बाद पीवाई क्विज कीजिए एंड रिवाइज. ऐसा नहीं है कि आपको वेराइटीज ऑफ सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, एक सोर्स को फॉलो कीजिए बट कंप्लीटली कीजिए. जी 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 बच्चों वेरी को लगता है कि हम ये वाला वीडियोस भी देखेंगे, वो वाला भी देखेंगे. नहीं, वैसा करना नहीं चाहिए. एक वाले में भी आपको हर कुछ मिल जाएगा, बस उसके बाद पीवाई क्विज जरूर करना चाहिए. यस यस एंड ऑल्सो वन मोर थिंग जो लास्ट में हमारी जो प्रिपरेशन रही थी बिकॉज हमारा एग्ज़ाम था तो उसमें से पहले जो रिवीजन क्लासेस रही थी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे थे तो वो आपकी स्टडीज़ में कितना इम्पैक्ट लेकर आए एंड ऑल्सो उस समय आपने टाइम को मैनेज कैसे किया बिकॉज लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे एक तरीके से हमें हर एक चीज़ों को जो स्कैटर्ड चीज़ है उसको बैलेंस करने में उसको यहाँ पे कंबाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो उस समय आपने कैसे स्ट्रैटेजी अपनाई कि लास्ट मोमेंट पे मुझे कैसे समराइज करना है ईच एंड एवरीथिंग कि और कितना टाइम देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे और रिवीजन्स पे लास्ट मोमेंट पे लास्ट इन द सेंस कि अगर एग्जाम है तो उसके 1 वीक तक उससे पहले तो वो टाइम वो फेज कैसा रहा आपका आकांक्षा आपका कैसा फेज रहा वो मैम मैंने लास्ट में मतलब वो कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा नहीं कि कुछ नया पढ़ लूं या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा थे. मैंने मेरा फोकस रहा कि जैसे आप प्रैक्टिस करवा रहे थे क्वेश्चंस, जी तो जी मेरा मतलब बेसिक फोकस उसी पे था कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ, क्योंकि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं तो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाती है. यस उसके यस अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं उतना हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज हमें अब समझ में आ रही है. यस यस उसके अलावा मैम मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी. जब मोमिना और पृष्टि बता रहे थे तो मुझे एक चीज याद आई कि जैसे हम लोग सिर्फ लिमिटेड सिलेबस पे फोकस करने के अलावा कभी अपनी एजुकेशन फील्ड के बारे में आसपास वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कोई नई रिसर्च, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं इसमें उससे रिलेटेड अगर कोई भी नई चीज़ है तो उस पर भी एक नज़र रखना मतलब ज़रूरी है. क्योंकि हर बार नेट के एग्जाम में कुछ एक अलग चीज़ वो लोग ऐड कर देते हैं. लाइक इस बार इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे और उससे रिलेटेड ऑथर्स, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी. तो मुझे लगता है कि जैसे हम करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं उसी तरीके से हमें एजुकेशन के फील्ड में भी क्या हो रहा है आसपास, कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, और जैसे आप हम लोग को सजेस्ट करती रहती है नए नए आर्टिकल्स जो आप मतलब शेयर करते हैं कि इस हमारी फील्ड में ये एक नई चीज हुई है, तो उनको भी एक बार गो थ्रू करना मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होता है. क्योंकि हम एकदम सिर्फ सिलेबस पे फोकस नहीं कर सकते कि हाँ मतलब बस इतना ही आएगा. तो हमारी फील्ड से रिलेटेड जो चीज हो रही है उस पर भी एक बार मतलब देखना कि आसपास कुछ नया तो नहीं हुआ है, क्या पता वही एग्जाम में आ जाए जैसे इस बार हुआ था. एक्सपेक्टेड है यस यस आकांक्षा एंड मुमीना जी मैम. मैम एक्चुअली मैंने आपको पहले ही मतलब आई टोल्ड यू लेट ना, इससे पहले मैंने आपसे बात की कि मतलब
So it was consistent. Well, I Hmm. was consistently going through this. Hmm. Before net, on 5 November, there was JKPSC, and before that, Okay. Hmm. it was going on. My preparation was going on, but the Hmm. last 15 days almost, Hmm. I was much relaxed because I was aware that I am done. This is Hmm. done. Everything is done. But ma'am, the consistent these mocks Hmm. that going on. Um, Okay. consistent mocks because I was clarifying the concepts once again from the Hmm. other side as well. Hmm. तो उस चीज ने बहुत हेल्प की मुझे. Okay. Okay. The concept is the Hmm. mocks, the Hmm. test. Test series. Yes, Hmm. ma'am. Hmm. Test Hmm. series, I was following the test series as well because if we go through the whole study material, Hmm. once we check our performance through via these very coaching, these mocks, these questions, तो Hmm. मैम हमारी अपनी परफॉर्मेंस जो होती है वो हमें पता चलता है हम कहाँ पे है. Yes. Yes. True. True. Yes, ma'am. I Hmm. think that is the biggest strategy to be followed by the net aspirant. Okay. What about Prusty? मैम आज इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, सो Okay. कंसेप्चुअल एनालिसिस तो ऑलमोस्ट था, Hmm. और मैंने एनालाइज करके पता कर दिया था कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है. Okay. So I practiced PYQs, Hmm. paper one, Hmm. and last few days I mostly focused on revision, what I have made the notes. Hmm. So, Okay. so I can say those who have lagged JRF or NET with few marks, analyze what is the thing that you are lacking. Hmm. But there must be some problem in your preparation, because maybe you are neglecting paper one, Hmm. or you are just sticking to some limited sources. If you have made, first of all, make a base of your syllabus. Your Hmm. notes should make a base of your syllabus, then Hmm. add something to it. That's why Yes. notes making is important, Important. because I cannot say a single video can cover entire thing, Hmm. but make a note of it. Hmm. You can have a base from that, add on a regular basis, Okay. because each day you will get to know even more things, more knowledge. Hmm. So add those information on that note. Okay. So yes, ma'am. ओके गुड गुड एवरीवन. सो लास्ट नोट, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था आपका कैसा रहा मेरे साथ, एंड ऑल्सो लास्ट मोमेंट पे आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे और स्टूडेंट्स को कि वो भी बस अपना प्रिपरेशन करते रहे, छोड़े नहीं, बिकॉज एक मेजर एक एग्जांपल है मुमीना का कि 7 टाइम्स नेट एंड देन एक लास्ट जेआरएफ. तो वो जो एक फेज होता है हमारा जो कंसिस्टेंटली तरीके से हम कैसे लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. और वो एक मोटिवेशन जो मुमीना ने एकदम क्रैप करा और लास्ट मोमेंट पे उनका जो जेआरएफ हुआ एट द एंड, तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग है. तो आप Thank you. लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं सभी, आकांक्षा, पृष्टि एंड मुमीना, कि व्हाट शुड वी डू एंड लास्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग कैसा रहा, कितना ब्यूटीफुल रहा? Akansha. Okay, यस I will आकांक्षा, start यू कैन first. गो. यस. Ma'am, I will only say कि मतलब मीटिंग यू जस्ट मतलब मेरी लाइफ का सबसे लकीस्ट वो था इंस्टेंट कि मैंने सडनली आप सर्च करते हो यूट्यूब स्क्रॉल करते हो आपको ढूंढा, क्योंकि मुझे मतलब लास्ट मोमेंट पे मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी. इवन जब मैंने रिजल्ट आने के बाद भी मैंने आपसे कहा था कि मुझे लग रहा है कि आई थिंक आई शुड वर्क हार्डर. यस. तो आई वॉज श्योर अबाउट नेट बट आई वॉजंट श्योर अबाउट JRF. तो इट वॉज यस. जस्ट लक फॉर मी दैट आई वॉज एबल टू क्लियर JRF टू. तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स और पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि अगर अगर वो सिंसियर है इस चीज़ को लेके एंड इफ़ दे बिलीव कि मतलब वो आगे इस फील्ड में जाना जाना चाहते हैं, तो आपकी गाइडेंस उनके लिए मतलब बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है. मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना सिंसियर टीचर कोई और देखा है, स्पेशली क्योंकि हम लोग कॉलेज में भी पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो मतलब एक फॉर्मेलिटी टाइप रहती है. बट अगर आप इस फील्ड को लेके सिंसियर हैं और आप सिर्फ उतना बुक्स के अलावा बाकी चीजें जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से आप और आपका चैनल, आपका कंटेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है सारे एस्पायरेंट्स के लिए. क्योंकि आप सिर्फ मतलब एक ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपना सिलेबस खत्म करवा दिया, आप हमेशा बच्चों को आगे की चीजों के लिए मोटिवेट रखते हैं. मतलब एक जो टीचर का प्रॉपर रोल होता है कि बच्चे को मतलब लास्ट मतलब जर्नी नहीं, जर्नी के बाद में आप पूरा गोल तक लेकर जाते हैं. ये नहीं कि आपने सिर्फ अपना पढ़ा दिया और काम खत्म हो गया. तो मुझे लगता है उस हिसाब से आप बेस्ट मतलब गाइड और मोटिवेटर हैं सारे एस्पेक्ट्स के लिए. तो मैं मतलब आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म कि मतलब Overwhelming. यस Hmm. मैम. Thank you so much Akansha for the appreciation and all the very best for all the success in future. जो भी आप यहाँ पे काम करें आपको एक सफलता की प्राप्ति हो. Congratulations again. थैंक यू And सो मच Mumina मैम. and Mumina. Thank you. Ma'am, actually, I think there should be there are so many rules for to be successful in Hmm. life.
Like for me, I believe that we should believe in ourselves. Yes, yes, very Because important point. there should be a firm belief Hmm. that I can do it. No doubt, there was some background motivation for me. Hmm. My brother, Hmm. he was totally na, motivating me, Hmm. encouraging me, Hmm. prodding and goading me. No, you have to do, you can do, you have a talent, you Hmm. can prove it. Hmm. So uski wo confidence थी that totally was energizing me every time to have this very goal in my Hmm. mind. Hmm. Hmm. Otherwise, falling in these very attempts, that was sometimes demotivating me. Hmm. Only for 15 days. But Hmm. after that, I would console myself. No, you have to. Yeah, he was every time prodding and goading me. No, you can do it. Hmm. It was just this point. Hmm. You can do it again. And be confident to and face the challenge. Hmm. Face the challenge. Okay. Make the challenge to challenge you. Matlab, Hmm. tell the challenge that I can challenge you as well. As well. Yes, yes, yes. True. Yes, ma'am. And be active and smart in your efforts. Active and smart. I think Hmm. smart work is best than hard work. Hmm. Mhm. And third point is कि we should be enough religious, genuine, and sincere in our efforts. Okay. There Hmm. should be nothing like that कि background push is there. No. Hmm. It's ourselves. There should be an internal motivation to have To this. have this. Okay. Ji, Good ma'am. point. Good point. Hmm. Yes, ma'am. These things keeping in mind, Hmm. ma'am, I will tell my aspirants that they can do it well. Hmm. Ma'am, my last finish up was from yours platform, and I Hmm. thank you once again because this was my lifelong dream, and the dream was back before but finally, Alhamdulillah, I cracked my this very goal in a good way, in enough overwhelming way. So, ma'am, I would request and advise have tie up with ma'am and Hmm. share your everything. Tie up. There should be a tie up with ma'am, Nidhi ma'am. Nidhi ma'am is like my matlab, na, close to my heart because she has made me like to feel, ma'am, Mumina, you can do it and I can help you and you have this very courage and you Hmm. can go on. Yes. Ma'am, they should go this through this very platform. I Hmm. advise them. But Hmm. besides that, Hmm. there should, मैंने पहले ही बोला कि there should Hmm. be an internal motivation Internal motivation. for Yes. the aspirant. Hmm. Internal Hmm. motivation is important. Hmm. बाकी जो हमारा एक्सटर्नल का एटमॉस्फेयर है वो तभी Hmm. काम करता है जब हम इंटरनली मोटिवेट होते हैं. Yes. तो आई थिंक these all steps should be followed by the net aspirant to crack this in a good way. अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस मुबीना एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप जितना भी आगे आप जो भी आप काम करें तो एक अच्छा आपको एक सक्सेस Thank you. मिले एंड Thank you once कॉन्ग्रेचुलेशंस again. अगेन Thank पृष्टि you once पृष्टि again. कंक्लूडिंग रिमार्क फ्रॉम योर साइड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So all the ones who have like not failure, I will not call it failure. These are the steps towards success. Hmm. Just prepare. Start again preparation. Hmm. Don't get demotivated Hmm. because at the end, when you will see that thing qualified for JRF and assistant professor, that is worth it. Yes, that The feeling is happiness is something. something Yes. else. That happiness is something else because when the scorecard got flashed, I just Hmm. scrolled down. What happened? Not score, direct qualified for JRF and assistant professor. That is something else. Hmm. The weight, the patience, everything is worth it. Hmm. So start your preparation again. You are going to get it. And about Nidhi ma'am, first of all, ma'am, you have such a sweet voice. Thank you so That is much. what Thank you. Well, that is I what agree attracted me with at this. I first. totally agree. Mom's voice is Yeah, really soothing to really ears. sweet. Yes, yes. And that made me love education even because that is where I started Hmm. preparing education. Hmm. I started loving education, and I am like proud that I have chose education as my career. At first, I was in dilemma what I am doing. I am a geology student. I am Hmm. doing education, but Hmm. now I love education, and now I'm also a student of yours for OPSC PGT. So Yes. the journey is going on Hmm. Yes. because before this, I never really joined any of your courses Hmm. because at the last when SSB lecture, I Hmm. lacked it with 1 mark. And Hmm. first thing came into my mind, I should join Nidhi ma'am's class so that I can get OPSC PGT. So thank Thank you you. so much, ma'am,
Thank you so Even much, and Anusha. yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so Ma'am, I much. feel so, Thank you ma'am, so I much feel so everyone. Thank you motivated so and much for Thank you joining so this much, session ma'am. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को आपके रिजल्ट्स के लिए और अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि ऐसी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो आगे जाके यू विल श्योरली गेट ऑल योर टारगेट्स जो आपने यहाँ पर बनाए हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, congratulations ma'am. and Thank you, thank you so ma'am. much for joining session have a great day ahead thank you You so too, much ma'am. Thank you. thank you so much for joining